a couple of days back, where 6 precious lives were lost. We explained and we gave a detail of the different circumstances that led to the incident as per the information that was received by us. And apart from that, we have also seen that statements have come from the Honorable Chief Minister of Assam that the entire incident in the shooting that took place was unprovoked and there was excess use of power by the police from Assam. And keeping that in mind, we have requested the Government of India to constitute a central agency inquiry into this entire incident that took place, either through CBI or through NIA or any appropriate agency, so that the truth can come out. And more importantly, action is taken against those who are responsible for this inhuman act. The Honorable Union Home Minister has given us the assurance that he will constitute an inquiry under a central agency, and the order for that should be coming out any time. And we thank the Honorable Union Home Minister for his positive response. Apart from that, we shared with the Honorable Union Home Minister that the root cause of the entire tension that has been building up in that area and other areas has to do with the long pending border issue between the two states. And different incidents have led to the situation becoming more tense, which ultimately led to the situation where about a couple of days back where this unfortunate incident happened. And therefore it is very important that all efforts should be made to ensure that the border dispute is settled. And now that this incident has happened, the talks that were going forward has hit a certain hurdle, and there is a lot of area where trust has to be built, and hence the intervention of Government of India will be necessary in that front. We also discussed about the security and safety of the people in the border area, especially in the sensitive zones and the disputed zones. And we urged the Government of India to initiate a process to ensure that both the state governments come together to ensure that such kind of incidents do not take place in the future, which will require both the state governments and administrations and the different machineries to work closely to avoid any kind of such incidents in the future, and hence the intervention of Government of India will be necessary to move in that direction. Apart from that, other local issues about the state regarding the demand for 8th schedule and the involvement and the including of Garo and Khasi language in the 8th schedule was reiterated once again to the Honorable Union Home Minister. We've also once again mentioned about the need to implement the inner line permit in the state of Meghalaya, for which a resolution has been passed in the Assembly, and also to allow the state government to go ahead with the State Act of the MRSSA, which we have passed in the Assembly, but we're waiting the consent of the Governor. So these also points were mentioned to the Honorable Home Minister. And apart from that, we also stress on the fact that the basic supply of essential commodities into Meghalaya should not be disrupted, and full support should be there from the neighboring states and from Government of India to ensure that essential commodities and the supply of essential commodities should not be impacted in the state of Meghalaya. Thank you very much. CM sir, now we are hearing that some vehicles are also torched there. असमीज तो नहीं होगा मुझे, हिंदी में बोल सकता हूँ मैं. हिंदी में बोल हिंदी सेम हिंदी
अच्छा, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछना। आज शाम को मेरे कैबिनेट कोलीग्स के साथ ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर और अलग अलग जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आज जो मेरे साथ आए हैं, आज हमारी मुलाकात यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से आज हुई। और इस मीटिंग में हम लोगों ने जो 2 दिन पहले मुकरो गांव में, जो वेस्ट जेंते हिल्स में गिरता है मेघालय स्टेट में, जहां पे एक इंसिडेंट हुआ, जहां पे आसाम पुलिस की तरफ से जो फायरिंग हुआ उसमें 6 लोगों की जान चली गई। उस इंसिडेंट के बारे में हम लोगों ने यूनियन होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया और किस किस सिचुएशन में और किन किन वजहों की वजह से जो है वो इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में हमने हमारी तरफ से यूनियन होम मिनिस्टर को हमने ब्रीफ किया। और हमने यूनियन होम मिनिस्टर जी से ये डिमांड किया कि जो इनोसेंट लाइव्स जो जान गए हैं, जो लाइव्स गए हैं, उनमें जस्टिस हमें मिलना चाहिए और एक सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच्चाई निकले और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों के अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ होना चाहिए। मैं होम मिनिस्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा ये रिक्वेस्ट और ये डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट किया और जल्द ही एक सेंट्रल एजेंसी की तरफ से इंक्वायरी सेटअप भारत सरकार की तरफ से सेटअप होगा। उसके अलावा भी हमने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो सिचुएशन दोनों स्टेटों के बीच में बहुत सालों से चल रहा है और खासकर जो बॉर्डर इशू में टेंशन है, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ये टेंशन जो है ये आते रहता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे रिजॉल्व करें। और इसके लिए पिछले कुछ सालों में और महीनों में हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग इसको रिजॉल्व कर पाए और कुछ कुछ जगहों में हम लोग इसको रिजॉल्व कर पाए हैं, लेकिन कुछ जगह भी बाकी हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो जिस तरीके का जो इसमें इफेक्ट हुआ है, जैसे हमारे जो इनोसेंट लाइव्स जो लॉस हुए हैं, इसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट की तरह एक सिचुएशन आया है। तो इसमें हमारा रिक्वेस्ट यही था भारत सरकार से कि उनका यहाँ पे एक इंटरवेंशन हो ताकि हम लोग इन बातचीत को और इस ट्रस्ट को हम लोग बढ़ा पाए और इस सिचुएशन का हम लोग एक सोल्यूशन जल्द ही इसको निकाल पाए। भारत सरकार का अगर यहाँ पे वो इंटरवेंशन रहेगा और सपोर्ट रहेगा, मुझे विश्वास है कि हम लोग इसको, इन बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा हमारा ये भी रिक्वेस्ट था कि जो बॉर्डर में हमारे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी जगहों में टेंशन होते रहता है, तो इसके लिए अगर भारत सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाए जहाँ पे दोनों स्टेटों के एडमिनिस्ट्रेशंस और गवर्नमेंट्स को बुलाकर कुछ कुछ जो स्टेप्स हम लोग ले पाए ताकि वहाँ पे शांति रहे और उन एरियाज़ में आगे फिर से ऐसे हादसे न हो और ऐसे इनोसेंट लाइव्स लॉस न हो, इसको सोचते हुए अगर भारत सरकार दोनों स्टेटों के साथ बात करके कुछ सिस्टम अगर बना पाए और कुछ स्टेप्स ले पाए, तो मुझे विश्वास है कि हम लोग आगे आने वाले समय में ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। तो हमारा ये रिक्वेस्ट था भारत सरकार से कि ये अगर स्टेप लिया जाए तो दोनों स्टेटों के लिए और हमारे लोगों के लिए भलाई होगी। इसके अलावा भी अलग अलग हम लोग ने पॉइंट्स जो स्टेट के लिए, जैसे कि अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसमें सप्लाई में भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट थी भारत सरकार से कि एसेंशियल कमोडिटीज़ का सप्लाई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और जो सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हमारे लोगों को चाहिए वो हमें मिलने चाहिए और इसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए भारत सरकार से और बाकी स्टेटों से, उसके लिए भी हम लोगों ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया। इसके अलावा हमारे स्टेट में अलग अलग डिमांड्स थे, जैसे कि हम लोग ने 8th शेड्यूल में गारो और खासी लैंग्वेज इंक्लूड होना चाहिए। ये डिमांड हम लोगों ने बहुत सालों से रखा हुआ है, तो इसका भी हम लोगों ने एक बार फिर जिक्र किया। इसके अलावा भी हम लोगों ने ILP मेघालय में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, इसका डिमांड भी हम लोगों ने एक बार फिर हम लोगों ने रिमाइंड किया।
और हमारा जो खुद का एक लॉ है MRSSA लॉ जिसको हमने पास किया, जो अभी गवर्नर के अप्रूवल के लिए रुका हुआ है, उसको भी जल्द ही हमें एक अप्रूवल मिले, उसका भी हम लोगों ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया. What is the law all about? What is the law all about, sir? Sorry? The new law? New law, What is the law all about? This is basically, we have passed, there's a law that we have passed that talks about the Residency Safety Act, where we require people to register when people are coming into the state, which is a normal process when you enter a hotel. You need to register, you need to give your information, you need to give all the identity cards, everything. We want a system where this registration can be done in advance also. And within at least 10-15 days, the people who are coming in should give it. And this should be an online system so that the entire safety and security of the people coming in can also be maintained and a full record can be maintained. This, as per law, is already being done. As you are all people who are in press and you travel a lot, you know that you go to different locations. Every time you go to a hotel, you have to give your ID card, you have to give your information. That same system is something that we want to create it on an online basis, and we want to give the option of it being registration being done in advance so that we can keep full information about all the people entering the state. This is similar to ILP? It's not. ILP basically requires the permit of the person to come into the state, permit of the state to be given to come into the state. In this case, it is about registration. One question is that there are several incidents today. Assam के साइड से कोई लोग वहाँ पे जा नहीं पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब how can we work on that? Your tourism is on disaster, like cerebral. और वहाँ पे असम का जितने भी लोग हैं, not only Assam, entire country. Just one please. If you both to talk, then I cannot वहाँ पे answer. भी ऐसा हो रहा है कि असम की ओर से कोई गाड़ी नहीं जा रहा है. Number one. See, let's understand. Lives are the most precious thing for all of us. Please don't disturb. Lives are most important for all of us, number one. Precious lives have been lost. And I think it's important that people in the country should understand that this is a very, very emotional moment and a very sad moment for the people of our state. There is no price on a person's life. We have to also remember that keeping law and order is paramount for any state government or for any country also. And hence, all these will always have a price in terms of different impacts it may have on society, on livelihood, on tourism. But in the larger goal and larger interest of ensuring the safety of lives and maintaining law and order, certain tough decisions had to be taken. And that's the reason why the state government had to do this. Yes, tourism is affected, we understand, but we strongly feel that lives of people and the safety of the people is paramount for us. So what is the action taken? Let me finish. Number two, the point that you mentioned that the vehicles have been stopped. There's no specific instruction that vehicles should be stopped, but advisories have been given based on which different administrations have reacted in different ways, and there have been certain associations who have made their own decisions and they've decided not to go. These are situations that arise because of complicated and law and order situations like what we are facing right now. So it's not something that is unexpected, but we are trying to minimize the damage and minimize the inconvenience to the people. Third, you've mentioned about some incidents. Yes, there have been some stray incidents. These are some things that, as I said, the emotions are high and there are situations that are happening, but things are under control. Law and order is being maintained. We have sufficient forces. We have been communicating with the society and the community leaders, be it NGOs, be it church leaders, be it religious leaders, be it different kind of forums. We are in touch with everybody to seek everybody's cooperation to ensure that safety of the people is there and peace in general prevails. सर, असम गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है घटना के बाद, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो सिचुएशन हुआ, 6 इनोसेंट लोगों की जान चली गई, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये सब एक तरीके से देखिए तो इनकी कोई कुछ गलती नहीं थी, और जिस सिचुएशन में हुआ ये सब इंक्वायरी के बाद निकलेगा। तो जो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी एक्शन हुआ, ये पहला स्टेप है। और
इसमें जो सस्पेंशन हुए और जो ट्रांसफर्स हुए और जो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से उन्होंने खुद भी कहा कि ये पुलिस की तरफ से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया, तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से पहला जो स्टेप है। लेकिन जब तक जिन लोगों ने गोली चलाई और जिनकी वजह से इन लोगों की जान चली गई, जब तक इनके खिलाफ जो है प्रॉपर लॉ के बेसिस पे एक्शन नहीं होगा, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक मैं मानता हूं कि लोगों के मन में एक तरीके से एक अनसेटिस्फैक्शन लेवल तो रहेगा कि प्रॉपर एक्शन वहां पे नहीं लिया गया। तो मैं चाहूंगा कि जो सीबीआई या जो भी एजेंसी की तरफ से जो इंक्वायरी होगी जल्द होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लेना चाहिए। आप दोनों की बातचीत भी हुई है असम के आपकी बातचीत भी हुई है असम के मुख्यमंत्री से, क्या बातचीत हुई और आपने क्या कहा? हम लोग की बातचीत होती रहती है और इस घटना के बाद हुई भी है काफ़ी बार। और इस सिचुएशन में जैसे मैंने कहा कि ये एक बिल्कुल ही अनप्रोवोक्ड एक सिचुएशन था जहां पे इनोसेंट जो पब्लिक थी उन पर गोली चलाई गई। तो ये किसी तरह से ये अगर देखा जाए तो एक ही बहुत अनफॉर्चुनेट वे में हुआ। तो इस बात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे कहा, एक सिंसियरिटी और एक कमिटमेंट होनी चाहिए दोनों सरकारी तरफ से कि हम लोग जो भी इसके पीछे हैं, इसको हम लोग इनके अगेंस्ट में हम लोग एक्शन लेने। नंबर 1 ये है। नंबर 2, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जितना भी आप कहे, एक तरीके से अगर देखेंगे तो मेघालय के पब्लिक को एक बहुत ही जोर का झटका लगा है और जो 5 जाने गई हैं ये मामूली चीज़ नहीं है। तो इसलिए इसको हील करने में समय लगेगा, लेकिन ये इसको हील करने के लिए और सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए दोनों सरकारों को और भारत सरकार को भी एक पॉजिटिव स्टेप आगे लेना चाहिए। और इस चीज़ों में कुछ बातें हुई हैं, वो मैं अभी डायरेक्टली मैं अभी यहाँ नहीं कह सकता क्योंकि वो चीज़ें अभी डिस्कशन मोड पे ही हैं। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए काम करना पड़ेगा। और जो बाकी जो 2-3 इंक्वायरीज के बारे में और जो ये सेंट्रल एजेंसीज के बारे में बातचीत हुई और जो ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में बात हुआ, तो जो एक्शन लिए गए हैं वो हमारे कम्युनिकेशन के बाद ही हुए हैं। Sir, I have a question. Tourism is, as you said, human life is lost. Tourism cannot be related to human life. But then this question is in reference to what Tuliram Ronghang, the CM of Parvi Among said, and what MP of Parvi Among said. He is bringing the point of timber smuggling. The foresters of Assam, they were chasing the truck, which was allegedly driven by the timber smuggler. So what do you have to say about that? We don't know about the facts about what smuggling was or was not happening. That is what we have been told. But I don't think timber smuggling can justify killing innocent people. If that is the case, I don't know what will happen in this world. If for timber smuggling, if you're going to start taking innocent lives and killing innocent people and civilians, I don't think that's justified at all. The Assam Chief Minister spoke about SOP. No, I'm answering to your question. You have to first, you have to, एक मिनट रुकिए भाई साहब, एक करके. I'm here, I'm going to answer to everybody. I'm answering to your question. I'm saying that yes or no, I don't know. Let the inquiry come, whatever the case may be. But does smuggling of timber justify killing innocent people and taking innocent people's life? You tell me. So I don't think that's justified at all. If you're smuggling, catch them. As per law, act against them. That's something that we're not here to say don't do it or do it. That's as per the invocation law. But I don't think taking innocent lives justifies, smuggling justifies taking innocent lives. So Block 1 and Block 2, that area. Do you relate this case to this border dispute? Border dispute? Block 1 and Block 2 is border dispute. Yeah, right. What is your question? Through this incident you mean? No, I'm referring to again the statement of these two guys. They're saying there is, even Assam Chief Minister said this incident, this unfortunate incident has no relation to border dispute. You signed a pact with government of No, Assam. yeah. Let me explain to you. The incident that happened is right at the border of the PCR Kandoli area, which is one of the disputed areas.
For the last many years, there are Khasi people in population who are living in Block 1 and traveling into the PCR area and coming into Mukroh village and other villages which are in Meghalaya. And there's always been tension along that line. Now, did this incident happen because of border issue? It didn't happen because of border issue. But the circumstances that have led to this incident happening, the situation which has tensed up to this incident happening, has been fueled or kind of has been the root cause has been the border issue. So the border issue is what is being there around the whole thing, and the tension built up because of the border issue and the kind of the kind of difficulties that the people living in the border are facing. But that's what led to this situation where, when the vehicles were stopped or were fired at, and then the people were arrested, the reaction was there from the people's side, and that's what it has been there because of the way the last many years they have faced harassment at many levels. So therefore, it is not because of the border issue that this incident happened, but border issue is what has led to the situation and circumstances of what has happened in this thing. So you cannot disconnect the two. But the Chief Minister, sir, you have been holding talks with Government of Assam. You have signed a pact in March in presence of the MHA, Home Minister. So 6 areas, issues in 6 areas resolved. So, these areas, Block 1, Block 2, are not resolved? So no, the 6 areas are different areas. Those are the rest of 6 areas are still left, and Block 1 and Block 2 are part of the areas which are still second phase which is left. One thing is that sir, border issue में आप लोग ने बहुत बार बात भी किया है, लेकिन this case अगर हम लोग केस पूरे देखते हैं तो स्मगलिंग का जो टिम्बर को ये करने के, लेकिन आपको ये असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि it's a very sad incident. तो अभी as per your stand, what you want to say to Assam government? Well, we just simply want to say 2 things. First is that justice should be done, and those people responsible for the killing of innocent lives should be punished. And we are seeing that Assam government has taken action in terms of suspension. They have also agreed to the CBI inquiry. In fact, they have supported it and they have written. We would want that the inquiry should be done at the earliest and action to be taken, and the people who are responsible should be punished. Number 2, this entire situation now has really created more and more tension between the people living in the border area and also between the 2 states, where we have been trying to work towards finding a permanent solution to this situation. And hence it will be very important that the confidence building should happen. And this will require a lot of work now to be done at the grassroots level. And it starts with small things happening at the border areas, where we need to make extra effort now to ensure that the people living in the border areas are not harassed anymore. This incident should not happen in the future. And there has to be some kind of a procedural system set up in place where the people of those areas are taken care of. I not talking about the different activities which Assam government has been mentioning is happening. All those activities are at one part. What has to be done as per law, action as per law, that's a different issue. But I'm saying there is much more to life than just simply those 1 or 2 activities which they may be saying that are illegal activities. Take the action as per law. But I think the way the harassment takes place is not justified just because of 1 or 2 of these activities happening. There are ways to segregate the different problems and find solutions. And I think it's important that the Assam government and the Meghalaya government and central government work together in order to build up that confidence now that we have been affected. One question, sir. आपके 10 क्वेश्चन हो गए, आप बाकी लोगों को भी चांस दीजिए. जो गृह मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, जांच की बात हुई है, आश्वासन दिया गया है, वही फ्रेम की बात हुई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की घटनाएं दोनों राज्यों के बीच में. हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द हो. कोई टाइम फ्रेम पे फैसला हुआ है कि तय हुआ है? अभी टाइम फ्रेम पे फैसला नहीं हुआ, लेकिन हमने गृह मंत्री जी से कहा कि सर हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके ये इंक्वायरी होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए. तो इसमें गृह मंत्री जी ने कहा कि आज ही हम लोग इसका हम लोग एक्शन लेंगे, और मुझे विश्वास है कि आज या कल के बीच में ही ये जो इंक्वायरी है सेटअप हो जाएगा. आज या कल आपकी असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी इस मामले पर? हमारी बातचीत हुई है. हाँ, हमारी बातचीत हुई है. तो अभी वहाँ से निकलने के बाद तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलाऊं, तो शायद इसके बाद. सॉरी,
So as I was saying, that obviously we as a government are wanting that this problem should be resolved. The people of our state want that there should be a permanent resolution to this. Because we know all understand that incidents take place, but the root cause of all of these taking place is the tension in the border areas. And hence it is imperative that we find a solution to this. The issue now is that because of this incident that has taken place, the situations and circumstances have changed to some extent. And hence it will be important that the confidence building exercise needs to be done. We will require Home Ministry, Government of India to take extra steps to facilitate the process further. And so it may not be the same as before, and it may, have more complications, but that does not mean that our intention to not solving is not there. We want it to be solved. We want it to move forward, and we still want to move forward. But we'll have to see, and we will see the situation that happens. We trust and confidence building will take place. The steps that have been taken by the different governments will make us and believe that yes, there is seriousness, and then we will decide the way forward. So do you think that Assam government, in part of Assam, Assam government को सोचना चाहिए, मतलब they are responsible for the entire act? Sorry? मतलब जो असम की ओर से जो एक्ट हुआ उस दिन, अब सोचते हैं कि असम का ज़्यादा एग्रेसिव था, इट्स मोर एग्रेसिव फ्रॉम असम साइड. ऑनरेबल असम सीएम ने खुद ही अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पुलिस की तरफ से एक्सेसिव फोर्स हुआ है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है, सेकंड उसमें कोई थॉट नहीं है कि एक असम पुलिस की तरफ से एक्सेसिव फोर्स यूटिलाइज हुआ और फोर्स मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स वहाँ पे अप्लाई किया गया. सर्कमस्टांसेस जैसे हुए, जैसे मैंने कहा कि वो इंक्वायरी में निकलेंगे, जैसे मैंने कहा सर्कमस्टांसेस जो भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की इनोसेंट लोगों की जान लेंगे. ये गलत था, और इसके लिए जो भी जिसने भी ऐसा किया उस पर पनिश होना चाहिए. और सर्कमस्टेंसेस को आपके यार 20 क्वेश्चन हो गए. ये भी है कि सीबीआई और एनआईए के पास ऑलरेडी बहुत से केसेस हैं और बहुत से केस पेंडिंग हैं. एकदम सर, एक सवाल ये भी है कि सीबीआई और एनआईए के पास बहुत सारे केस ऑलरेडी हैं और कई सारे केस पेंडिंग भी हैं. तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि इस जो अगर जांच होती भी है होगी भी, तो इस पे कोई जल्दी फैसला आ सकता है? सीबीआई का और एनआईए का जो मैन पावर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर है. और मेरे ख्याल से कि इस सिचुएशन का जो एक इमरजेंसी जो है और जो इसका जो ग्रेविटी है उसको देखते हुए मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जो भी कदम उठाना चाहिए इसके लिए, इसको जल्दी रिजॉल्व करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को जल्दी खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, मुझे विश्वास है कि भारत सरकार वो कदम उठाएगी. Who? So you say harassment in border areas. Yes. Are you saying the Assam police or the agencies run by government of Assam are harassing the people of Meghalaya border areas? See, this is the situation has been like this for last 50 years, and this is the reason why everybody in the border area wants a resolution to this. There are many situations where people are not able to live their livelihood. They're not able to travel freely. There are always, circumstances, harassment, as I mentioned, has been there. There is nothing to hide in that. And both the governments know that there are situations that are happening there. And that's the reason why we want this entire solution to be done at the earliest. So this has been existing. And that's the reason why the tension has been building up. This is the reason why, people have been getting aggravated and agitated because of these different kind of incidences and harassments. And this building up has reached to the point where such incidents ultimately happen. And, there's always a lot of loss of lives and this kind of unfortunate incidents that happen. So yes, it's absolutely a part of the reason why this thing has been happening. सभी जो बॉर्डर की इंसिडेंट को लेकर बॉर्डर पे थोड़ा टेंस हो रहा है. फिर मेघालय में शिलांग में बहुत सारा गुवाहाटी का लोग भी रहता है, शिलांग का बहुत सारा स्टूडेंट गुवाहाटी में रहता है, उन लोगों के बीच में थोड़ा टेंशन हो रहा है अभी. तो इसके बारे में अक्सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो क्योंकि हमें मालूम है कि इसका जो एक तरीके से एक रिएक्शन हो सकता है, उसकी वजह से ही हम लोगों ने हमारे सारे फेस्टिवल्स और सारे प्रोग्राम्स हमने कैंसिल किए, क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी और लॉ ऑर्डर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. नंबर 2, क्योंकि हम जानते हैं कि आसामीज लोग भी हमारे यहाँ मेघालय में रहते हैं, मेघालय के लोग भी आसाम में रहते हैं,
तो इसलिए हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। पूरा जो हमारा मैन पावर है, पुलिस फोर्स है, हम लोगों ने सेंसिटिव एरियाज में हमने डाल चुके हैं। तीसरी बात यह है कि हम लोग चाहेंगे, और सबसे हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि हम लोग पीस मेंटेन करें। ये सिचुएशन कोई नहीं चाहता था ये सिचुएशन हो, लेकिन हुआ, और इसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग की जान चली गई। अब हमें एज ए सोसाइटी, कोई भी स्टेट में हो, एज लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, लोकेलिटी, एनजीओज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग कोशिश करें कि अब हम लोग कैसे शांति हम लोग रखें। और मेरा एक अपील है सबसे कि इस समय हमें शांति रखना बहुत जरूरी है। अभी जो सरकार की तरफ से जो काम करना है हम लोग कर रहे हैं, जो इंक्वायरी होना है होगा, और जो पनिशमेंट लोग को मिलना है वो मिलेगा। तो इसलिए मेरा यही अपील सबसे है कि हम लोग पीस मेंटेन करें और इस सिचुएशन को एस्केलेट ना करने दें। ये मेरा सबसे अपील है।